मानस सिद्दीकी है। मैं दैनिक राजसहारा न्यूज़पेपर से हूँ जी। मेरा सवाल है, अभी मैं देख रहा था कि आपका एक विज्ञापन चल रहा था जिसके माध्यम से दर्शाया गया कि आपने तकनीकी के माध्यम से, सॉफ्टवेयर के माध्यम से हर जगह पकड़ बनाई है SCL। जी। तो क्या राष्ट्रीय भाषा हिंदी के लिए भी कोई सॉफ्टवेयर आपने डेवलप किया जिससे उसका उत्थान हो सके, विकास हो सके, उसके लिए कुछ किया आपने? क्योंकि मैं अभी तक देखा था अंग्रेजी का जो है वो इतना हावी है, हिंदी का कहीं मामला कुछ नज़र मुझे नहीं आ रहा था। तो उसके उत्थान विकास के लिए आपके पास क्या योजना है, क्या करना है? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। हमारा एक मल्टीलिंगुअल प्रोडक्ट है जो मैंने अपने प्रेजेंटेशन में भी बताया था। 4 स्पेशल प्रोडक्ट हमने डेवलप किए हैं। एक मल्टीलिंगुअल प्रोडक्ट है, एक BPO प्रोडक्ट है, एक रूरल PC है और एक थिन क्लाइंट्स। चारों प्रोडक्ट्स सारी लैंग्वेजेस में चलते हैं। एक स्पेसिफिक है जिसमें कीबोर्ड वगैरह पूरी हिंदी के लिए ओरिएंटेड है, पर सिर्फ हिंदी के लिए नहीं है, बाकी भारतीय भाषाओं के लिए भी। धन्यवाद। Anything else? Any other questions? Mr. Chaudhary, Yeah. This is Regina from the Mint. Yeah, hi. Hi, sir. What's your revenue model for these products? Well, the products would be available from any of our HCL DigiLife stores. They'll be available from our channel partners. They'll be available at large format stores. So you come, pick up decide which product you want, choose the product, pay your money, go off. Number one. Number two, we also offer financing. So we have a financing model in which you can start with 2 types of options there. One, you can swipe your card, take a personal loan from any of the bank and pay it over 12 months. That's a simpler option. The other option is that you actually pay over a 2-year or 3-year period where you have to pay monthly installments of somewhere around 400 rupees a month. Sir, but what's your revenue model? How are you making money from such low price products? Numbers. Now look at the size of this country. You know, we have been associated with creating the phone market many years ago. We started with 12 years ago on the phone market. Those days we used to sell 20 phones a month or 10 phones a month. Look at the kind of prices and the functionality that you have on the phone today. Very powerful. So the whole revenue model has become huge volume. It's all volume. How many you plan to ship on 26th? Now you're catching me again. Sorry, I can't answer that question. We'll start shipments on 26th of January. That's what we mentioned. Shiva, if I may just ask you finally. Yes, please. You had mentioned at other forums, you had pointed at the Indian contribution even to the Intel inputs that have gone into devices like this. Absolutely. Now we have an Indian company turning this into a commercial, rolling out a product. So would it be overstating the case to say that this is as much an Indian achievement as the 4-wheel device that is being shown in Pragati Maidan? Certainly, Anand, this is, it takes someone like you to point it out to me. You're absolutely right. I mean, we had a huge hand in designing this product in Bangalore. This was actually conceptualized by our emerging markets platforms group. There's a tremendous amount of work that has gone into the software of it. Ajay is intimately familiar with that. Yeah. Both our teams have worked on software a lot. Last That couple was of very months, important. getting the Linux to the type of robustness and the types of support that it needed on all the cards that are popular here and so on and so forth. So yeah, in many ways, this was a platform that is, built in India, built for India, and so on and so forth. Yeah, absolutely. Thanks for pointing that out. Ajay ji. Yeah, sure. In the sector. Hi. I'm myself Abhijit Deshmukh from Marathi publication Deshonnati. Yeah, hi. First of all, I congratulate you for your great innovation. मैं ये पूछना चाहता था कि आप 26 जनवरी को लॉन्च करने जा रहे हैं जी। तो जैसे कि आपने कहा कि आप नंबर्स के ऊपर आपका रेवेन्यू मॉडल डिपेंड होगा, तो मैं ये पूछना चाहता कि आप ये भी उम्मीद करते हैं कि बड़ी डिमांड आएगी, तो आप कितनी बड़ी डिमांड पहले इस दौर में फेस करने की तैयारी कर रहे हैं? आप क्या सोच रहे हैं कि पहले जो आप लॉन्चिंग करेंगे उसके बाद जो पहला महीना होगा, पहले 15 दिन में आप कितना सेल कर पाओगे, आपकी तैयारी कितनी है? तैयारी तो काफी है, पर देखना है क्या नंबर्स आते हैं। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि मार्केट हमको ज्यादा सरप्राइज करे और वेटिंग लिस्ट हो जाए, अच्छी बात होगी। उससे हम आगे बढ़ के ज्यादा प्लान करेंगे। तो हमारी तो यही इच्छा है कि बड़ा हो, जितना बड़ा हो उतना हम बनाने के लिए तैयार हैं। अभी तो मेरी 2 फैक्ट्रीज हैं, 2 बड़ी फैक्ट्रीज हैं। अभी हमने उत्तरांचल में नई फैक्ट्री शुरू करी है,
इसमें बहुत कैपेसिटी हमने क्रिएट की हुई है और ये प्रोडक्ट तो बड़ा छोटा है, बहुत सारे बन सकते हैं वहां। तो इसकी कैपेसिटी अभी हम सिर्फ एक शिफ्ट में चलाते हैं दोनों फैक्ट्री की डिमांड आएगी हम 2 शिफ्ट चला देंगे, इसमें क्या प्रॉब्लम है? कुछ समय लगेगा तो चला दें। की स्ट्रैटेजी हमने ये बनाई है कि हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन है ऑलरेडी, हमारे पास सर्विस है ऑलरेडी, उसके बेस पे हमारी पूरी स्ट्रैटेजी बनी हुई है। अगर हमारी डिस्ट्रीब्यूशन इतनी बड़ी नहीं होती और हमारी सर्विस स्ट्रैटेजी इतनी बड़ी नहीं होती तो हम बड़ी डिमांड को मीट ही नहीं कर सकते, क्योंकि हम प्रोडक्ट तो सप्लाई कर देंगे पर कोई देख नहीं पाएगा और सर्विस नहीं मिलेगी। तो ये बहुत क्रिटिकल था हमारी स्ट्रैटेजी में। तो ये जो लास्ट 5-6 साल हमने लगाए हैं डीप डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट करने में और डीप सर्विस क्रिएट करने में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इफ आई वांट टू टेक अ प्रोडक्ट टू द IT फॉर द masses. Ajay ji, one more question. This is Swapnil Saraswat from Star News. Yeah. As Tata's Nano is the world's cheapest car, so can we say that this is the world's cheapest laptop? I would think so. I think so too. I would think so. I didn't want to say it. I wanted somebody to ask. Mr. Chaudhary, Yeah. कंप्यूटर में अगर ये होता तो मैं बहुत खुश होता। ये तो मेरा दूसरा ड्रीम होगा कि वॉल्यूम भी बढ़ती जाए, प्राइस भी इंक्रीज होती जाए, तुम्हारी रेवेन्यू भी बढ़ जाएगी। Mr. Ajay, there have been attempts by several companies to come out with low-cost PCs, and this is a pragmatic experience that most of those efforts have met with lukewarm response. Do you think that this is not a scientific conceit, rather a serious product development efforts which will get the respectability of the masses? This is completely different. Here we have done a deep study of the market. We have looked at what are the Indian requirements of the product, and it has gone into the design of the product. We have looked at service requirements. We have looked at functionality. There is not a single thing that is missing. If you want to take a regular laptop and you put this next to it, put tick marks against the specifications that you want, you will find that everything is available. So, no functionality reduction. Of course, bells and whistles देना तो entry product में possible नहीं है, तो उसके लिए हमने दूसरा प्रोडक्ट बनाया, उसमें आपको जितने bells and whistles चाहिए आप ले लीजिए, और वो भी, that is also 50% of the regular price what you see in the market today. So the whole idea here has been, how do we crack the market? How do we create a product for the masses so that everybody's aspirations are met? Okay? Thank you. Mr. Chaudhary, one here. Here you mentioned that perhaps this is the world's cheapest laptop. I actually wanted to ask you if what kind of competition do you see from OLPC's XO laptop or even Intel's own Classmate PC? And Mr. Shiv Kumar, do you see any kind of clash here between the Classmate and MyLeap? Actually, if you see the whole marketplace, the objective of this product is completely different from the objectives of the earlier products that we're talking about. This product is meant for anybody. It's not, as I said earlier, beamed at a specific market. The OLPC attempt was fundamentally to beam and create a market for the schools. It's a school product. It has all the functionality of school. It has all the software for schools. Here, the approach has been, you can use it for whatever application you want. So start with a base application, take it for a school, take it for your office, take it for insurance agent, take it for a sales representative.